on digital governance for public sector. We welcome our honorable speakers for the inaugural session. We welcome Chief Guest of India Digital Empowerment Meet and Awards, Sri Ajit Singh Pal, Honorable Minister of State for IT and Electronics, Government of Uttar Pradesh. A huge round of applause for him. We welcome Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, who will be the keynote speaker for the inaugural session. We welcome you, sir. I'll also request Mr. Kumar Vinit, Special Secretary, IT and Electronics, MD, UP Resco, Government of Uttar Pradesh, who also happens to be the program chair of this conference. I request him to come on, sir. I also request Mr. Ajitab Sharma, IS, Chairman and Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited, to come on stage, please. A huge round of applause for him, please. I also request Mr. Amit Raghuvanshi, Entity Head, SR India Private Limited, come on stage, please. And I also request Mr. S.N. Rai, co-founder and director, Lava International Limited, to come on stage, please. A huge round of applause for him, please. I request co-founder of APAC News Network, Sangamita Mohanty, to come on stage and hand over plans to our esteemed speakers for the inaugural session. We welcome Sri Ajit Singh Pal, Honorable Minister of State, IT and Electronics, Government of Uttar Pradesh. A huge round of applause for him, please. To Sri Durga Shankar Mishra, IS, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. To Mr. Ajitab Sharma, Chairman and Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited. To Mr. Vinit Kumar Vinit, who is also the program chair. To Mr. Amit Raghuvanshi from Acer India. And to Mr. S.N. Rai, co-founder and director, Lava International Limited. As the Indian tradition goes, we commence any good thing with the lamp lighting. So I request honorable guests to kindly inaugurate the third edition of India Digital Empowerment Meet and Awards, the Uttar Pradesh edition, but by lighting of the lamp. If you sir can come here, sir, please. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Can we have a huge round of applause for the official inauguration of APAC Third India Digital Empowerment Meet and Awards? Just to apprise all of you, I'll request, I can see many esteemed delegates are standing. You can take your seats so that we can all listen to the visionary speeches by the honorable speakers in a relaxed mood. Thank you so much. Just to give you an overview, APAC News Network is a community building knowledge consulting media company. We're focusing on creating awareness on the importance of technology innovation for various sectors, governance, healthcare, education, enterprise. And we are
creating this kind of knowledge sharing platforms by bringing communities together so that we can create a pool of discussion which will help us, which will enable us to move into the right direction for the future. And as Durga Shankarji always tell us that please document the outcomes of the discussion. We do document the outcomes of our conferences. Durga Shankarji has been a mentor to us for many years, since his days in the government of India, then in state government as well. And he'll be happy to know that whatever conference we are doing, we are documenting that and we are sharing with the stakeholders so that conference is not the end, it's just the beginning of a long way to go. Some outcomes can be achieved based on the discussions made in the conference. So, and as we all believe, we are also focusing on the sustainability aspect, be it technology for governance, healthcare, education, urban transformation, healthcare. We are also focusing on how to make the earth cleaner and greener and sustainable, and how we can use judicially technology to transform lives, again, to make a sustainable and futuristic India of tomorrow. With this, I'd like to invite Sri Kumar Vinit, Special Secretary in IT and Electronics and MD of UPDESCO, Government of Uttar Pradesh, to give his welcome address. He's also the program chair. Huge round of applause for him, please. थैंक यू सो मच माननीय मंत्री जी, आज के मुख्य अतिथि महोदय, respected Chief Secretary sir, our distinguished guests all around over here. First of all, thank you all for coming over here to this esteemed program which says empowering people and nation through digital innovations. Well, for the first time when Sangamitra approached me along with Shivani that yes, APAC wants to do this program, and as government of Pradesh also has a mandate to support all the startups to come over with their programs, and ultimately we have to enter into such a conference where ultimately it is men, material and machine that have to come together. So men is there. When I say men, it is gender agnostic. It doesn't mean men and women both. So material and machine, when they come together, they invent something. That invention, that discovery has to be shared. It has to be discussed. Only then the outcome that is actually in the science, technology and engineering, the engineering part that actually goes per se to the common man for the use of it as a nation to build upon. So this conference is one of that integral part of the system which actually allows all of us to come together. We have manufacturers here, we have engineers here, we have end users here who come together and actually discuss and analyze that what actually we are going to have. Talking about Uttar Pradesh as a 1 trillion economy goal set up by Honorable Mukhyamantri ji, we are all striving very hard towards it. I had the privilege of listening to Honorable Chief Secretary sir in one of his dictions in his alma mater in IIT Kanpur. In one of his point, then he actually said that state government took him up from his village, native village, and he rose to the Chief Secretary to this place. In the entire process, one thing, one element was very much there, and that was state as an enabler and state as a facilitator. So in this role, again, we are trying hard, we are striving very hard to help ourselves to be the best enablers in India so that all the manufacturers feel at ease to come over here in Uttar Pradesh. In the same context, today APAC has organized this summit, and I'm really very happy to be a part of it, and I'm privileged to be the program chair of it. Once again, thank you so much. Thank you so much, Sri Kumar Vinit, for sharing your thoughts and kind of work being done by the IT department in UP and how it is the most preferred state for IT investment as well. Now let's hear from the man who knows, who has seen it all, be it in government of India, be it in state governments, a man who has transformed India in many ways, who always believe in the power of technology and innovation for transformation, be it as the Secretary of Minister of Housing and Urban Affairs in Government of India, earlier Joint Secretary in MHA, and now as a Chief Secretary of UP. He is a man who always believed that technology can transform lives. Technology can be the game changer. So let's hear from him, Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary of Uttar Pradesh, to deliver the keynote address. A big round of applause for him, sir.
माननीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, अपाक के सीईओ श्री सौविक गोस्वामी जी, आज के इस एक दिन के डिजिटल एम्पावरमेंट मीट कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में भाग ले रहे तमाम सारे साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपाक को और सौविक गोस्वामी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखे हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जीबिशन भी यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में आपको जानकारी होगी, पिछले 5-6 सालों से बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है न्यू इंडिया का, जो उनका विजन है कि जब हम आज़ादी का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे 2047 में, तो हमारा देश एक विकसित देश होगा, जिसके लिए उन्होंने अमृत काल का एक संज्ञा दिया है। जब वो 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज अमृत काल की प्रथम बेला है और अब हम एक पंच प्राण के माध्यम से देश को विकास के इस तेजी के साथ लेके जाएंगे, जिससे कि जब हम 2047 का आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश एक विकसित देश होगा। और इसकी रूपरेखा आपने पिछले 8-8.5 साल में पूरे देश में बहुत अच्छे से देख रखी होगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो अछूता हो विकास के एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। आप चाहे कृषि क्षेत्र को ले लीजिए, सेवा क्षेत्र को ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, मानव संसाधन विकास को ले लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप ले लीजिए, जो हमारे सोशल सेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य के बारे में ले लीजिए, शिक्षा के बारे में ले लीजिए। हर एक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन पूरे देश में एक सबको नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से परिवर्तन में एक जो बात स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसकी पहली घोषणा उन्होंने पहले अपने संबोधन, देश के संबोधन में उन्होंने 15 अगस्त 2014 को की थी और मैं साक्षी हूं, वहां पे मैं था एज एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जब उन्होंने उद्घोष किया था कि देश को, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती जब हम मना रहे होंगे तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस स्वच्छता को वो देश की आजादी के ऊपर रखते थे, वैसा हम देश को बना करके देश को स्वच्छ कर देंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और आप सोचिए 2014 के पीछे अपने इमेजिनेशन को, अपने क्योंकि हम सब अपने आप को आगे पीछे बहुत कुछ ले जा सकते हैं। आप जरा 2014 के पहले ले जाकर के हमारे शहरों की, हमारे गाँव की स्थिति को देखिए। आप एयरपोर्ट की, रेलवे स्टेशन की, बस स्टेशन की, बाजार की, मोहल्ले की, कस्बे की, हर जगह की स्थिति को जरा देखिए। ऐसा लगता था जैसे कि गंदगी से हम लोग आत्मसात कर चुके हैं, हमें नजर नहीं आती थी। घर के बाहर निकलिए, कूड़ा पड़ा हो, आपको लगता ही नहीं था कि ऐसा कूड़ा वहां पड़ा है। लेकिन आज जो देश जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ है पिछले 8-8.5 सालों में, पूरा देश एक, मैं नहीं कहूंगा कि 100% स्वच्छ हो गया है, लेकिन आज देश में ये इस प्रकार की
एक आत्मविश्वास जगा है कि हमारा देश पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल जैसा हम पहले थे। अगर आप पुरानी इतिहास में अगर आप जाके देखें तो हमारे कैसे नगर थे, कैसे हमारे गांव थे, उस प्रकार की स्थिति जो है, हमें उस एक आदर्श स्वच्छता की तरफ हम पहुंच चुके हैं। और ये आदर्श स्वच्छता कैसे हुई है? ये लोगों ने मिल करके, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये स्वच्छ भारत मिशन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये लोगों का कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। जन जन के मन में इस बात को डालना है कि हमें स्वच्छ रहना, हमारा घर हो, हमारा कस्बा हो, हमारा सड़क हो, हमारी बाजार हो, हमारा कार्यालय हो, हमारी फैक्ट्री हो, हर एक को स्वच्छ रखना है। और जो एक आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री, आज पूरा देश उनके पीछे चल रहा है। मैं समझता हूं कि दुनिया का इतना बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहीं भी, किसी भी जगह, पूरे हमारी मदर अर्थ के ऊपर कहीं भी इस प्रकार के इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा परिवर्तन कहीं नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहा, क्योंकि मैं उस मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी रहा, इसलिए मैं साक्षी हूं देश की इस यात्रा में कि जिस प्रकार से कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन एक तरफ नहीं हुआ, एक तरफ तो हमारी वैचारिक, जो हमारी जो सोच समझ, हमारी जो सोचने की बात है, उसके बारे में परिवर्तन हुआ। आज अगर आप कहीं कूड़ा फेंकिए, पहले दिल्ली में बड़ा एक आम बात हुआ करती थी, जब मैं वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था, आप जाइए ऑफिस से घर जाइए तो रास्ते में लोग गाड़ी के दरवाजे खोलते थे, उठा के कुछ फेंकते थे, और कोई टोकने वाला नहीं। इनफैक्ट किसी को बुरा भी नहीं लगता था। आप कोई बॉटल से कुछ पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और उसके बाद उठा करके बाहर फेंक दिया, जैसे कि बाहर ही कूड़ादान पड़ा हुआ है। रास्ते भर आपको ऐसी चीज नजर आती थी। आज आपको ऐसा नजारा कहीं भी नहीं दिखता। अगर कोई आपके सामने कुछ फेंकता है, खाने के बाद फेंकता है, तो तुरंत कोई टोकता है कि भाई आप इसको उठा लो। पहले आप ट्रेन में चलते थे, ट्रेन में लोग खाते पीते सब, आपका ट्रेन जब तक आप पहुंचे तब तक पूरा का पूरा जो फ्लोर भर जाता था। अब अगर कोई करता तो दूसरा उठा के ले जाके कूड़ेदान में डाल देता है। ये हमारे विचार में परिवर्तन। दूसरा, हमें एक नई सोच आए कि हम जो है कूड़े से भी एक कंचन बना सकते हैं, उससे भी हम लोग उससे एक वेस्ट टू वेल्थ की तरफ, ताकि चाहे वो गीला कूड़ा हो, सूखा कूड़ा, हमारा ड्राई वेस्ट हो, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी आई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव हुआ करता था 2010-11 में, और हमें एक A to Z के माध्यम से कानपुर में हमने एक बहुत बड़ा प्लांट लगवाया था, एक नई चीज शुरुआत की। मुझे लगता था कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, और पूरे कानपुर की स्वच्छता के बारे में, और उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला था। बड़े उसको मैंने काफी इज्जत के साथ उसको मैंने अपने यहाँ डिस्प्ले किया कि प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला इस बात के लिए। लेकिन अब मैं अपने आप को जब 11 साल पीछे जाकर के देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जो काम मैंने किया वो हमने नकल कर ली, किसी विदेश की नकल कर ली, और हमने उसके हिसाब से काम कर दिया, वो हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है हमारी सोच में, हमारे जो चाहे बच्चे हों, इनोवेशंस के माध्यम से उनको जो है, अब जो बच्चे स्टार्टअप्स के माध्यम से नई नई चीजें, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, और एक नई सोच आ गई। हमें पूरा स्वच्छता अपने आप में एक नई इंडस्ट्री बन गई है, और इस इंडस्ट्री के बनाने में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए कि जब स्वच्छ सर्वेक्षण हम करते थे, स्वच्छ सर्वेक्षण जब मंत्रालय में शुरू किए थे, तो स्वच्छ सर्वेक्षण हम शुरू में किए थे, पहले बार हमने केवल 77 शहरों का किया, फिर बाद में हमने उसके बाद बढ़ाया 500 शहरों का किया, जिसमें 424 ने भाग लिया, बाकी लोग भाग भी नहीं लिए, और उसके बाद हम पूरे सारे शहरों का किए, और उसके सारे स्टैंडर्ड्स हम बढ़ाते चले गए। पहले हम साल में एक बार करते थे, फिर हम उसको जो त्रैमासिक करने लगे, फिर हम उसको रेगुलर कंटिन्यूअस उसका करने लगे, और हम एक्सेस टू द पब्लिक, लोगों तक पहुंचना चालू किए। ये सब कैसे संभव हो पाया? आज हर एक चीजें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, और किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने उंगली नहीं उठाया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण इतना बड़ा, आप पूरे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण करते हैं, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। अगर उसमें देखें लोगों के इनपुट्स, 10-12 करोड़ लोगों के इनपुट्स आते हैं, लेकिन इतना बड़ा चीज होने के बाद कोई उंगली नहीं उठाता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत है, ये हमारा आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी ताकत है।
ये ताकत है हमारी, आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी ताकत है, जिसके नाते हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे जैसा हम पहले सोच नहीं सकते थे, ऐसा विचार नहीं करता। तभी मैंने अभी एक आपका एग्जीबिशन देख रहा था, वहां पे क्विक्सी एक उनका प्रेजेंटेशन मैंने देखा, उन्होंने कहा कि एक उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसे किसी को भी अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, आपको पूरा उन्होंने व्यवस्था दे दी। ये वैसे हुआ कि किसी ने पहले बार एक औजार बनाया, वो जो कहते हैं छेनी और हथौड़ा बनाया, कि किसी चीज को अगर काटना हो तो उसके लिए अब आप छेनी हथौड़ा से आप ऐसे करेंगे तो आपका कट जाएगा, आप उसको ये शेप आप दे सकेंगे। अब उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे आप छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे ऑफिस हो, बड़े ऑफिस हो, कितनी भी किसी भी लेवल को आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, इट इज लाइक यू हुक योर सेल्फ एंड यू कैन डेवलप योर ओन सिस्टम। कैसे सिस्टम आपका ऑटोमेट हो जाएगा। तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन में जिस प्रकार से आईटी का इंटरवेंशन हुआ, और आईटी का इंटरवेंशन का स्वच्छ सर्वेक्षण में नहीं हुआ, बल्कि वो तमाम सारी चीजें ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट आने लगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे 10 साल पहले। मैंने कहा कि 11 साल पहले जब हमें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, हमारे दिमाग में बात आ नहीं सकती थी। उसमें रिकॉग्निशन था कि कोई दुबई से देखने आ रहा है, कोई पंजाब से देखने आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से देखने, तमाम लोग आते थे, बड़े गर्व के साथ हम दिखाते थे, देखो हमारा ऐसे प्लांट चल रहा है। और अब मुझे लगता है कि ये प्लांट बिल्कुल सही नहीं था, हमारे लिए उपयुक्त नहीं था, हमारे देश के लिए। उसको पहले सेग्रीगेट कर अलग अलग प्रोसेस करना, उसको ऐसे करना ताकि हमारे देश को फायदा हो। अब हम देश की सोचते हैं, जो हमारा देश में प्रधानमंत्री जी ने जो टीम इंडिया की बात कही, ये हमारा जो 2047 की जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो पहुंचने के लिए टीम इंडिया को काम करना है। और टीम इंडिया मतलब वो चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय लोकल सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, ये सब मिलकर के हम टीम इंडिया बनाते हैं। हम सबको मिलकर के ऐसा कुछ करना है जिससे नए भारत में, जो नया भारत है, उस नए भारत में हर एक को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और हर एक अपने पूरे जो उसकी पोटेंशियल भगवान ने दे रखा है, जो हमारे प्रकृति ने, भगवान ने हम सबको अब जो भी पोटेंशियल दे रखा है, उस पूरे पोटेंशियल के मुताबिक हम अपने आप को पूरी तरह से, पूरी क्षमता के मुताबिक इस अर्थव्यवस्था को योगदान दे सके, अपने समाज को योगदान दे सके, अपने प्रदेश और देश को योगदान दे सके। ये कमाल हुआ है इस प्रकार का जो ये जो काम हुआ है, ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के नाते हुआ। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जो स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी हम 100 शहरों में बनाएंगे, जब 100 शहरों के स्मार्ट सिटी की उन्होंने बात की, हमें पता भी नहीं था कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, क्योंकि उस समय में उसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट। हमने सोचना प्रारंभ किया कि आखिर जो प्रधानमंत्री चाहते क्या है, क्या होगा स्मार्ट सिटी। और आज हम दुनिया को सिखा सकते हैं स्मार्ट सिटी क्या होता है, कैसे आप सिटी को स्मार्ट बना सकते हो। वहां हमने 1 साल लगा, पूरे 1 साल में बहुत विचार मंथन के बाद एक स्मार्ट सिटी का रूपरेखा तैयार की गई और उसको 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और जब उन्होंने लॉन्च किया, देखिए कि छोटे से मंत्र से, एक जैसे होता है कि पहले हमारे ऋषि मुनि एक छोटा सा मंत्र दे देते थे, 4-6 शब्दों का मंत्र देते थे, उससे पूरी बात समझ आ जाती थी। उन्होंने जब लॉन्च कर रहे थे, और उस समय मैं वहां पे विज्ञान भवन में मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि स्मार्टनेस इज नथिंग बट गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस इज द मूल मंत्र है पूरा स्मार्ट सिटी का। कि जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1000 लीटर पानी है और 1000 लीटर पानी से आप केवल 10 लोगों को आप पूरा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास तो 25 लोग हैं और 25 लोगों को ऐसे पानी पहुंचाइए जिससे कि वो 1000 लीटर ही पर्याप्त हो जाए। और ये तब पॉसिबल है जबकि पूरा का पूरा आप उसका मैनेजमेंट इस प्रकार से करेंगे कि ताकि कहीं भी कोई वेस्ट न होने पाए, एक एक उसके बूंद का सही तरीके से प्रयोग हो पाए, और इसके पीछे आप किसी को पीछे नहीं चला सकते। ये हमारा टेक्नोलॉजी की ताकत है जिसके माध्यम से हम हर एक को पानी हो, चाहे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास अफरात रिसोर्सेज नहीं है। भगवान ने हमें पर्याप्त सब कुछ दिया है, लेकिन अफरात नहीं दिया है। जो पर्याप्त दिया है, होता कि आप सोच सकते हैं, कैन यू, आपको मैं उदाहरण, जब बस चूंकि आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं इसलिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कई हमारे शहरों में पानी की उपलब्धता, एक आम इंसान की उपलब्धता जरूरत होती है
लगभग 130 लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें वो नहा भी सकता है, खा भी सकता है, सारे के सारे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। कई सारे शहरों में 400 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है। जो रिसोर्स है, जो जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उतनी है, 400, 450, 300 लीटर है, 3 गुनी 4 गुनी है। लेकिन पानी वहां 8 घंटा आता है, पानी का वहां रेशनिंग करना पड़ता है, क्योंकि पानी सारा का सारा वेस्ट हो रहा है। जो पानी हमारा निकालते हैं वहां से लेकर के जब वास्तव में कंज्यूमर तक पहुंचता है, वो पानी कम हो जाता है, क्योंकि काफी लीकेज हो जाता है, पानी की वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और उसके बाद अब अमृत 2.0 जिसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में, मैं उस समय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी था। वहां पे एक टारगेट रखा गया कि वी विल गो फॉर ड्रिंक फ्रॉम टैप। ड्रिंक फ्रॉम टैप का मतलब हुआ कि आप सीधे सीधे टैप खोलिए। आप लोगों ने जो विदेशों में ट्रेवल किया होगा, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में आपने ट्रेवल किया होगा, आप सीधे कोई भी टैप खोलिए, बाथरूम का भी टैप खोलिए, उससे सीधे पानी पी सकते हैं। उसकी क्वालिटी इस लेवल की, आप सीधे पानी पी सकते हैं। एंड 24/7 वाटर सप्लाई। आप जब भी टैप खोलिए, एक तो आप टैप खोलेंगे पी सकते हैं, और जब भी टैप खोलेंगे तो उसे पानी गिरेगा, ऐसा नहीं कि पानी बंद रहेगा। तो पानी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर पानी की टंकी हर छत पे, वो काली काली टंकी जो लग जाती है, आपके सिंटेक्स टैंक लग जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं बच रहेगी। फिर ये जो यहाँ पे जो बोतल, यहाँ तो शीशे की बोतल है, तमाम सारे जो प्लास्टिक की बोतलें लोग लेकर के जगह जगह चलते, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप सोचते कि हम कितनी बड़ी अपने नागरिकों को कितनी बड़ी सुविधा दे देंगे अगर ड्रिंक फ्रॉम टैप हो जाएगा और 24/7 वाटर सप्लाई हो जाएगा। आज ऑलरेडी हमारे देश का एक शहर है जिसको मुझे गौरव प्राप्त हुआ, पुरी में जाकर के मैंने इसकी शुरुआत की। पुरी जगन्नाथपुरी जो हमारे भगवान की एक नगरी है, जो हमारे 4 धाम में एक धाम भी है, जहाँ पे जो आबादी उसके कई 5 गुना 7 गुना ज्यादा लोग वहां पे नित्य घूमते हैं, वहां पे दर्शन करने आते हैं। आबादी तो कम है, लेकिन आबादी से 5 गुने लोग वहां पे टूरिंग के लिए, ट्रैवलिंग अपने दर्शनार्थी के रूप में या श्रद्धालु के रूप में वहां पे आते हैं। पूरी शहर ऑलरेडी 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप हो चुका है। और ये कैसे हुआ? केवल टेक्नोलॉजी की ताकत से। ये कैसे हुआ? उस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, आईटी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ये सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम बैक टू बैक एक एक चीज को हम लोग ट्रेस करना चालू करें, और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में हमने 75 वार्ड्स को ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई का काम हमने शुरू करा दिया। हमारी टीम जाके सारा देख चुकी है और उत्तर प्रदेश में ये काम चालू हो चुका है, और हम ये काम को अगले साल 2023 में पूरा करेंगे। और जब वहां करेंगे तो हम पूरे प्रदेश में इसको करेंगे, क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम जो देश में, दुनिया में जो बेस्ट है वो उत्तर प्रदेश में होगा। और जो दुनिया में बेस्ट है कि हम जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सुना करते थे ड्रिंक फ्रॉम टैप 24/7 वाटर सप्लाई, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इस पे काफी सारा काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। और टेक्नोलॉजी के लिए जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है, स्मार्ट सिटी में आपने अभी कोविड का देखा, हाल में एक बहुत बड़ी त्रासदी कोविड की जो है, कोविड-19 जो फरवरी मार्च 2020 में शुरू हुई। इनफैक्ट हमारे देश की, दुनिया के अब काफी ज्यादा तारीफ हुई कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश ने कोविड को हैंडल किया, इसकी हर जगह तारीफ हुई। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन करके निकले और हर चीज खुद करने लग गए, जहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं था हम सब कुछ करने लग गए। जैसे हमने दुनिया को भी तमाम सारी सहायता प्रदान की। इस कोविड के दौरान हमारा एक चीज जो कि बहुत सारा काम है वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जैसे जब मैं मंत्रालय में था, वहां इसको मैं कहता था इट इज लाइक अ ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। जैसे एक आदमी का, एक इंसान का हमारा ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें से मैं टच कर रहा हूँ, टच करने के बाद हमें कुछ फीलिंग हो जो कि हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, हर एक चीज ब्रेन प्रोसेस करके मुझे डायरेक्शन देता है। ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शहर का ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। पूरे देश में देखते देखते जो स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो शुरू हो ही गया। तमाम सारे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए।
लेकिन वो जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी के थे, वो इंटीग्रेटेड थे एक तरह से सारी की सारी, चाहे पुलिस को सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को सेफ्टी चाहिए, लोगों को पीने का पानी चाहिए, लोगों को सैनिटेशन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, लोगों को जो है स्मार्ट हेल्थ चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए, उनके ग्रीवांस का रिड्रेसल करना है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए कि जिससे कि आप घर से निकले सीधे सीधे बस में बैठ जाए, सीधे सीधे ट्रेन में बैठ जाए, सीधे सीधे मेट्रो में बैठ जाए, आपका पूरा कब किस समय क्या चीज उपलब्ध है, एक आपकी पूरे पूरे होल प्रोसेस को, लाइफ को किस प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं कि किससे हमारे सिटीजन्स का कितनी आसानी लाइफ में आ जाए। इनफैक्ट स्मार्ट सिटी का एक लक्ष्य ये था टू ब्रिंग ईज इन लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को इंप्रूव करने का, और वो करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ने बहुत मदद की। साथ ही साथ जब कोविड का दौर आया तो कोविड के दौर में पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, चाहे वो सैनिटेशन करना हो, चाहे लोगों को दवाएं पहुंचानी हो, लोगों को केयर करना हो, वो घर पे है तो उनको सही से मेडिकल केयर, डॉक्टर के साथ उनके साथ उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक चीज को ध्यान रखा। अगर आप देखें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे, इस पे मैंने एक पूरी केस स्टडी तैयार की जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स पे, वो केस स्टडी को वहां पे उपलब्ध है, आप जाके देखिए कितने किस्म के उपयोग हुए। आज अगर कोई कहीं पे वहां पे अगर कोई घटना होती है, पुलिस सिक्योरिटी का जो, जैसे कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई किसी ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और किसी किस्म की वारदात हो गई, हर जगह कैमरा है जो आपको देख रहा है और हम उसको ट्रेस करके, मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे तमाम सारे पुलिस के केसेस सॉल्व किए गए। एक तो बड़ा अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं कि कोई सज्जन जो है, ये केस है कि कानपुर का, यहाँ पे कोई सज्जन अपने घर पे उन्होंने जो अपना कैमरा लगा दिया, उसको जो जिसके माध्यम से उसको ट्रेस कर रहा है। ट्रेस करने के बाद वो तो गए हुए थे यूएस में, देखेंगे somebody has broke open his house और आकर के उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर, उन्होंने देखा, वहां पे देख के उन्होंने पुलिस को वहां पे फोन किया, एंड अभी वो अंदर चोर पड़ा हुआ है, somebody came and caught him right there red handed। ये कमाल है टेक्नोलॉजी का। मतलब यहाँ पे कानपुर में घटना हो रही है, अमेरिका से कोई फोन कर रहा है और यहाँ पे हमारी पुलिस पहुंच के सीधे घर के अंदर चोरी करते हुए पकड़ लिया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है कि आप कुछ घटना करके भाग गए, आपको लगा कि हमें तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको तमाम सारी चीजें, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके तमाम सारी चीजें करते हुए आप यहाँ से वारदात किए बनारस में, आप पहुंच गए बॉम्बे में, आपको बॉम्बे में ट्रेस करके वहां पे कहां पे ठहरे, वहां पे आपको पकड़ लिया गया, राइट इन द होटल। मैं आपको, ये भी इंसिडेंट अखबारों में रिपोर्टेड है, इसलिए आपको वहां जाके पकड़ लिया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। तो स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से आप हर घर से कूड़ा निकला कि नहीं निकला, कितने बजे निकला, कहां पहुंचा है, एक एक चीज इसको देख सकता है। और ये काम करने के लिए अभी मैं जब मैं मिनिस्ट्री में था, वहां मैंने बेल को एक टास्क दिया था कि हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इतना सारा चीज हो गया है, इतनी हमारी ताकत निकल कर गया कि जब यहाँ पे कुंभ था हमारे प्रयागराज में, करोड़ों, एक दिन में 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं जिस दिन वो हमारी जो ये माघ मेला में, और जब कुंभ होता है तो उसमें कई करोड़ लोग स्नान करते हैं। इतने सारे लोग, पूरा एक नई कस्बा बस जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि पहले मैंने कुंभ को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियों में, चाहे होम डिपार्टमेंट में पुलिस के तौर पे देखा है, हेल्थ में जब सेक्रेटरी था तो हेल्थ के तौर पे देखा है, लेकिन जब मैं भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी था और ये कुंभ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुरुआत किया, उसके बाद जब मैं आकर के देखा, ये इसकी ताकत समझ में आई कि आप कहां से कैसे मूवमेंट करेंगे, रेलवे स्टेशन उतरते हैं, बस स्टेशन उतरते हैं, कैसे क्या क्या करेंगे, एक एक चीज हमारा कैमरा के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं और वहां पे कमरे में बैठे बैठे वहां पे गाइडेंस दे सकता है कि इस रोड को अभी रोक दीजिए, इस रोड को आप आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे करिए, ताकि देयर इज ए स्मूथ फ्लो ऑफ पीपल। ये हमारे टेक्नोलॉजी की ताकत है। टेक्नोलॉजी की ताकत है जिसके माध्यम से बिल्कुल हमारा वो दिव्य कुंभ जो है, जो पीछे 2 साल पहले यहाँ पे कुंभ हुआ था प्रयागराज में, वो कुंभ बिल्कुल किसी भी प्रकार की कठिनाई के, हर आदमी तारीफ कर रहा था। दुनिया के जो तमाम सारे लोग आए, हर एक ने तारीफ किया कि इतना बढ़िया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा बड़ा कुंभ जो हुआ, इतना बड़ा ह्यूमन कांग्रेगेशन, बिगेस्ट कांग्रेगेशन ऑन दिस मदर अर्थ, मदर प्लैनेट, इस पे जो हुआ उतना बड़ा, इतने अच्छे से हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन एक चीज जिसका जो उसमें रोल हुआ
वो रोल था हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसका बहुत बड़ा रोल था। चीजों को, चाहे वो सैनिटेशन के बारे में, लोगों को सुविधाएं देने के बारे में, और आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी का और ज्यादा प्रयोग करेंगे। अभी जो 2025 में कुंभ आएगा उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जा रही है। अब टेक्नोलॉजी के लिए एक तरफ तो हमें जो है नई व्यवस्थाएं चाहिए और दूसरे तरफ उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे कल ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट ने इसको नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और उत्तर प्रदेश ने एक नई आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी, ये दोनों चीजों को कल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि हमारे प्रदेश में जो बेस्ट से बेस्ट हो, जो मैंने कहा दुनिया का जो बेस्ट हो, वो हमारे प्रदेश में होना चाहिए। एक ऐसा माहौल बना है, उस माहौल से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के, नागरिकों के जिंदगी को हम बहुत अच्छा बना दें, और वो करने के लिए ही अभी एक लक्ष्य रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। $1 ट्रिलियन, अभी तो हमारे प्रदेश की जो हमारी जो इकोनॉमी है वो करीब 250 बिलियन के आसपास है। इसको 4 गुना अगले 5 साल में कैसे करेंगे, और ये करने के लिए हर एक क्षेत्र को हमें पूरी तरह से इन्विगोरेट करना पड़ेगा, पूरी तरह से ऊर्जावान करना, पूरी तरह से ऊर्जित करना पड़ेगा। और उस ऊर्जा देने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विसेज का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। आज हमारे प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन चुका है, चल रहा है या बन रहा है। 13 हमारे 6 हमारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जो चल रहे हैं। आज बुंदेलखंड और पूर्वांचल, जो कि बहुत दूर होता था राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से, आज वहां पे 6-7 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में जो फ्रीट कॉरिडोर है, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, दोनों का सबसे बड़ा एरिया हमारे प्रदेश में है। दोनों मिलते हैं हमारे प्रदेश में, जिससे लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हब हमारे प्रदेश में तैयार हो रहा है। आज जो हमारे प्रदेश में जो ये इनलैंड वाटर फ्रीट है, वो बनारस से लेके हल्दिया का, वो हमारा तैयार हो चुका है। आज सबसे ज्यादा मेट्रो का जो काम उत्तर प्रदेश में 5वां शहर मेट्रो चलता है, और ये मेट्रो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और मैं समझता हूं अभी बहुत जल्दी उसका पहला 17 किलोमीटर उसका उद्घाटन हो जाएगा। देश में 9 एयरपोर्ट हमारे चल रहे हैं, जिसमें 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। 5 एयरपोर्ट्स और आगे बहुत जल्दी 2 साल के भीतर चालू हो जाएंगे, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमने एमयू कर लिया। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से काम हुआ। लेकिन अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयोग, और दूसरी आप शांति व्यवस्था के बारे में आप जानते ही, आप हमारा मशहूर है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पे कोई भी न गुंडागर्दी चल सकती है, न किसी प्रकार का ऐसे लोग जो कि समाज के घातक हो, समाज को नुकसान पहुंचने वाले, समाज की व्यवस्था को नुकसान पहुंचे, वो नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना हुआ। अभी 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग इनवाइट किए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। किस बात के लिए इन्वेस्टमेंट करिए? हर क्षेत्र में। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में देखें तो हम सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन के जो है यूपी में तमाम सारी चीजें, किसी में पहला है, किसी में दूसरा है, किसी में तीसरा है। देश में सबसे ज्यादा तमाम किस्म के फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तमाम सारे हॉर्टिकल्चर के फल हो, सब्जी हो, उसके बहुत ज्यादा पैदा करता है। उसकी फूड प्रोसेसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक नई इंडस्ट्री हो सकती है। यहाँ पे टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल के ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। फार्मा के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आईटी सर्विसेज के बारे में। डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बन चुका है। ये सारी की सारी चीजें जिस प्रकार से चीजें खुल रही हैं, यहाँ पे ड्रोन का, यहाँ हमने 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक ड्रोन का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस IIT कानपुर में स्थापित किया गया। मेडिकल डिवाइसेस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस SGPGI, क्योंकि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं उत्तर प्रदेश में। आपका जो IT का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, IIT कानपुर का कैंपस है नोएडा, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बारे में बहुत बड़ा एक सेंटर वहां पे स्थापित किया गया। स्टार्टअप्स को बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम होगा, स्टार्टअप के माध्यम से सिडबी को एंकर करते हुए 1000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट फंड बना हुआ। यह भी हाल में एक नया इनोवेशन फंड उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया कि जो नई चीजें, नवाचार, जो नई चीजें लोग लेकर के आते हैं, उस नई चीजों को
उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर की मदद से एक नया फंड क्रिएट करने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश उसमें सपोर्ट करेगा। ये देश में पहला प्रदेश होगा जो इस प्रकार का एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तैयार कर रहा है, जिससे कि हमारे जो बच्चे या हमारे जो क्रिएटिव जो लोग हैं वो आगे बढ़े और आकर के कुछ ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि लोगों की जिंदगी आसान हो, लोगों के काम आसान हो। जो खेती हो रही है, खेती को लोगों को अधिक से अधिक वैल्यू मिल सके। और इन सारी चीजों के पीछे जो 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 चीज काम आएगी, जो मेरी स्मार्ट सिटी में लर्निंग हुई, वो लर्निंग है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारी आज जो आईटी की जो ताकत है, उस चीज को हम अधिक से प्रयोग करें। अभी इनफैक्ट मैं जब बात कर रहा था, आपके एनईसी से बात कर रहा था, मैं बताया कि बेल को हमने कहा कि जो ICCC है उसको हम लोगों ने एक ICCC लगाया 100 करोड़ 200 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी। ये सारा बनाया और बहुत अच्छे से चल रहा है। देश में और भी तमाम सारे जो ICCC अलग अलग रूप में चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे एज ए सर्विस ऑफर कर सकते हैं? अगर एज ए सर्विस हम ऑफर कर सकते हैं, बेल ने बना के मुझे दिखाया कि उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सर्विस के तौर पे वो पिक्सी का प्लेटफॉर्म की हमने बात की, वैसे तमाम सारी चीजें जो हमारे सॉफ्टवेयर है, टैली वहां पे लगा था, टैली का, दिस इज ऑल ऑफर्ड एज ए सर्विस। कैन वी ऑफर ICCC एज ए सर्विस? बिकॉज हमारा जो स्मार्टनेस इज नथिंग बट टू गेट मोर फ्रॉम लेस। हाउ टू गेट योर सिस्टम, अगर आप अपने पूरे सैनिटेशन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एज ए सर्विस ले लीजिए। एक छोटा सा हमारा कस्बा है जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख का कस्बा है, वो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके इस सर्विस को ले सकता है। यू कैन होस्ट इट। ये हमारी सोच है जिसको हम अब चाहते हैं कि इसको जो है किस प्रकार से लोगों को ईज इन लाइफ, ईज इन लिविंग, ईज इन डूइंग बिजनेस, जो हमारा जो काम कर रहे हैं उससे काम को आसान हो सके, और इसको कैसे एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, जो कॉस्ट है वो एफोर्डेबल कॉस्ट हो, ताकि हर कोई उसको एफोर्ड कर सकता है, ताकि हमारा डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और यहाँ पे हमारा जो रोल है वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास सारी की सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार तैयार कर रही है, कि जिसके माध्यम से आप आए और यहाँ इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके यहाँ से पूरे देश का जो ग्रोथ इंजन है हमारे उत्तर प्रदेश से प्रोवाइड हो। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्प है कि हम इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे अगले 5 साल में, उसको हम लोग पूरा करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल हो। और यहाँ पे आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा, जिसका आज आप ये जो मीट कर रहे हैं पूरे दिन भर का, मैं समझता हूँ कि आपके इस डिस्कशन से बहुत सारी नई नई चीजें निकल करके आएंगी। आपके अनुभव से आपने जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पे लावा और एसर दोनों के दोनों लोग मौजूद थे, यहाँ पे राय साहब और आप लोग का जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता होगा कि आज देश का करीब 45% मोबाइल हमारे प्रदेश में बनता है। आपको मालूम होगा कि मोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो इक्विपमेंट्स होता है उसका करीब 55% हमारे प्रदेश में बन रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डाटा सेंटर, अभी डाटा सेंटर की भी नई पॉलिसी बनाई। डाटा सेंटर जो पहला हमारा अभी नोएडा में शुरुआत किया है, और इस डाटा सेंटर से वो 250 मेगावाट का डाटा सेंटर, उनके सारे के सारे टावर्स अगले 1-1.5 साल में बनकर के तैयार हो जाएंगे, जो हीरनंदानी और योटा का मिलकर के बन रहा है। यही नहीं, करीब 600 मेगावाट के डाटा सेंटर के ऑलरेडी काम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चालू हो गए। और जो नई हमारी डाटा सेंटर की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक हमारा प्रदेश पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट से 25% से ज्यादा हमारे प्रदेश से उपलब्ध किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क लोगों के लाइफ में आएगा जब डाटा सेंटर होगा, किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। आज का जो गोल्ड है वो डाटा इज द गोल्ड। पहले लोग कहते थे पेट्रोल व द गोल्ड, गोल्ड को आपको पेट्रोल में कहते थे कि जिसके पास पेट्रोल है उसके पास ताकत है। आज की डेट में डाटा जिसके पास है उसके पास ताकत है। वो सारी की सारी चीजें ये डाटा के माध्यम से आप लोगों की लाइफ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली वी आर ऑल वर्किंग, सारे के सारे लोग मिलकर के एक ही चीज के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमारी ह्यूमन लाइफ कितनी आसान हो जाए, कितनी प्रोडक्टिव हो जाए, और उस काम को करने के लिए आप तमाम किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश इस काम के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ, और आज उत्तर प्रदेश में आप ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं, पूरे दिन भर का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी आएंगे, आपसे शेयर करेंगे, तमाम सारे अनुभव शेयर करेंगे। और मैं एक ओवरऑल
जनरल पर्सपेक्टिव मैंने आपसे बात की, लेकिन वो जब आएंगे तो स्पेसिफिक आपसे बातें करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इसके बगैर काम करेगा, क्योंकि स्मार्टनेस से क्या हो जाता है, स्मार्टनेस लाने के लिए ये लेयर बहुत आवश्यक है। आप पानी पहुंचा नहीं सकते लोगों के यहाँ जब तक कि पाइपलाइन न लगा दें, लेकिन पाइपलाइन लगाना पर्याप्त नहीं लोगों को पानी पहुंचाने के लिए। मैंने कहा अगर 24/7 करना है और उससे अगर आपको ड्रिंक फ्रॉम टैप करना है तो आपको आईटी का लेयर उस पर लगाना पड़ेगा, और वो लेयर जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है वो उस काम को करेगा। आपको वहां पे ड्रोन की टेक्नोलॉजी आपकी लगानी पड़ेगी, ऐसी जगह जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां हमारा ड्रोन पहुंचेगा, वहां रोबोटिक्स पहुंचेगा। वो सारी की चीजें जहां हमारी पहुंचनी है वहां उसकी पहुंचे। उन्होंने सोच सकते हैं कि रोबोटिक्स किस प्रकार से पूरा का पूरा मेडिकल क्षेत्र में इतना कमाल का परिवर्तन ला दिया है। इतनी प्रिसीजन आज की डेट में सर्जरी हो रही है, वो सर्जरी का कमाल है रोबोटिक्स। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में रोबोटिक्स की भी अभी हमारे ग्रेटर नोएडा में चीज बन करके तैयार हो रही, पूरी फैक्ट्री मैं समझता हूं अगले साल 2023 में बन करके वो चालू हो जाएगी। मैंने हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और इस काम को करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश ने 23 पॉलिसीज, पिछले 2-2.5 महीने में 23 पॉलिसीज विच कंस्यूट द होल स्पेक्ट्रम, आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वो सारी की सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि ताकि हम इन्वेस्टमेंट का अच्छा माहौल तैयार कर सकें। और मैं आप सबसे ये भी आपको स्वागत करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें, उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट को एड करें, उसको आप आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश आपके साथ होगा हर तरीके से। हम उसकी पूरी पूरी माहौल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लोगों को एक इकोसिस्टम बना रखा, वो इकोसिस्टम आपके सपोर्ट में होगा। मैं एक बार दोबारा सौभिक को आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और निश्चित तौर से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दिन भर के डेलिब्रेशन में कोई नई चीज निकल करके आती है उससे मुझे जरूर शेयर करें, ताकि वो हमारे आगे इस जो मुहिम एक उत्तर प्रदेश में चली हुई है, पूरे देश में जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर रखी है, उसमें हमें मदद मिले। धन्यवाद। जय हिंद। Always a pleasure and learning experience hearing from Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary of Uttar Pradesh, as he has not only given a broad overview of what is being done in the state of Uttar Pradesh, but what are the opportunities, what are the areas of opportunities where government and industry can collaborate. You talked about how technology is transforming lives in UP, and also overall in the other parts of the country. As taking cue from what you said, sir, we are also sharing, we'll be discussing best practice from other states like from Rajasthan, from Andhra Pradesh, Kerala, J&K. Officers from those states are also here. So that also gives us a national perspective that what are the best practices being done. But as you have said that Uttar Pradesh is on a path to reach $1 trillion economy, and I'm sure policymakers like you and ministers like sir will take the state to the new heights. Thank you so much for your kind words, sir. With this, with your permission, can I quickly ask Mr. Ajitab Sharma from Rajasthan to share his point of view? And okay, then we can have the Mr. Honorable Chief Guest address. Then you can leave, sir. For fine. Okay. Okay. So I request Shivani to or Sangamitra to come on stage and hand over the keynote address memento to Sri Durga Shankar Mishra ji, because he has to leave. Can we have that on stage, please? Yeah. A huge round of applause for him, please. That was Sri Durga Shankar Mishra, keynote speaker of the APAC Third India Digital Empowerment Meet and Awards. So Uttar Pradesh edition. With this, I request Chief Guest of the conference, Sri Ajit Singh Pal, Honorable Minister of State, IT and Electronics, Government of Uttar Pradesh, to share his vision. A huge round of applause for him, please.
धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इंडिया डिजिटल एम्प्लॉयमेंट मीट एंड अवार्ड उत्तर प्रदेश संस्करण में हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी हम लोगों के बीच में थे, अभी किसी कारण के बस उनको जाना पड़ा। हमारे आईटी विभाग के हमारे विनीत जी, कुमार विनीत जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, प्रिय वक्ताओं और प्रतिनिधियों में आईटी विभाग की यूपी डेस्को एंड एपीएससी न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया डिजिटल एम्प्लॉयमेंट मीट अवार्ड्स उत्तर प्रदेश संस्कृत उद्घाटन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे जानकर खुशी हो रही है, यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को सरोकार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में एक डिजिटल परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासन में सुधार, साथ साथ अनुकूल कृत्यों और नीतियों के माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हम अंतिम मील तक पहुंचने वाली नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए स्मार्ट गवर्नेंस को लागू करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे और राज्य में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विकास के लिए निवेश, प्रभावी बुनियादी ढांचे, अनुकूल नीतियों के साथ भी खोल रहे हैं। हमारा मिशन उत्तर प्रदेश को भारत में पसंदीदा आईटीईएस निवेश गंतव्य के रूप में स्थान देता है। यूपी के लिए विकास के रूप में इंजन में आईटी का लाभ उठाना और भौतिक समुदायों को जुड़े समुदायों को बदलना है, जो स्थायी आर्थिक विकास को महसूस करने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। हम लखनऊ में 100 एकड़ जमीन पर आईटी सिटी SEZ बना रहे हैं और राज्य के टियर 2-3 शहरों में आईटी हब बना रहे हैं। वहीं हम यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बना रहे हैं। हमने 2021 में 2050 मेगावाट का सेंटर उद्योग विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश के लक्ष्य के साथ राज्य का पहला डाटा सेंटर नीति की घोषणा की है। हम आईटी पॉलिसी 2020 और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं को भी लागू करते हैं। मुझे विश्वास है आईटी और आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में योगदान देना और इस फोरम के लिए किए गए विचार डिजिटल परिवर्तन के लाने के लिए आईटी क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उद्योग साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। एक बार फिर इंडिया डिजिटल एम्प्लॉयमेंट मीट एंड अवार्ड्स उत्तर प्रदेश के संस्करण के सभी प्रतिभागियों का स्वागत और धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर आए हुए सारे पत्रकार बंधु को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अजीत सिंह पाल जी for sharing with us the vision of government of Uttar Pradesh in terms of IT and IT investment in the state electronic sector and what are being there in the pipeline to transform the state. Now may I request Sri Ajitap Sharma, IAS Chairman and Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited, to share his vision, and then we'll have two industry perspective as well for the inaugural session. A huge round of applause for him. Right, respected Honorable Minister, Vineet ji and other dignitaries on the dais, and particularly all the audience and representatives of industry who are present here. First of all, I would like to,
Should I remove this? Yes, you want to? Okay. Yeah. Slide show. पहले चला के नहीं देखो. Yeah, okay. Sorry for that glitch. So how it will appear on the screen? अच्छा, it will come automatically. Okay. माफी चाहूंगा सर. So सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय और डायस पर मौजूद अधिकारीगण और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द ऑडियंस who is present here, the industry representatives and the representatives of office bearers of different IT industry and technology industry. First of all, I would like to thank APAC and UPDESCO for inviting me away from Jaipur and giving me this opportunity to express my views here. So first of all, I would like to congratulate the Chief Secretary who has just left. He gave such a vivid presentation and explanation of what all is happening in the state of Uttar Pradesh. So we had been hearing that in last period of 4 or 5 years, a lot of good things have happened and a lot of major policy decisions have been taken and how they are being implemented and the role the policymakers and particularly the bureaucracy is playing in the state, the mindset change which has occurred in the bureaucracy of the state and the political leadership which is taking ahead all these grand projects and schemes and policies. And as Chief Secretary very rightly mentioned that there is a set of more than 20 plus policies covering the entire domain of governance. So we hope that the manner in which these policies are being implemented, there would be good case studies and good experiences to learn for other states also. I am really delighted. So my purpose of coming here and I being invited here gets fulfilled after learning so much from what the Honorable Minister and the Chief Secretary spoke about. So I am not going to present like any major kind of case study or so whatever we have done, but taking a cue and taking a step ahead from what Chief Secretary spoke quite in detail about the IT intervention and use of technology and software and IT solutions in the government or the governance. So I just want to throw some ideas to this audience. It is basically for this audience and not more for the policymakers because policymakers already know what are the challenges which they face in their daily functioning while they frame the policies, why the policies do not get implemented. We come out with very huge and mega projects of worth of like 100 crores, 500 crores, sometimes 800 to 1,000 crore rupees, but they do not deliver the objectives for very objectives for which they were conceived and planned out. So as the title of this summit was digital empowerment, so I'll just end up by throwing broad ideas that where the IT industry should be looking for in future for IT enabling of the governance. So what is the scope and what is the problem which we sitting in the government as policymakers face while interacting with the IT industry? So there is a huge gap sometimes that what exactly we are wanting to do and what the IT vendor or the IT industry representative is understanding out of our demands and requirements and what finally happens. So I'll start with the basic premise that as of now, what we talk about like e-governance and IT interventions in governance is basically intervention in the government setup. It is more about e-government and less about e-governance because as so this is the broad outline of my presentation because
CS sir also fortunately and coincidentally spoke a lot about the interventions with of Uttar Pradesh and Government of India, Ministry of Urban Affairs and Ministry of Jal Shakti is making in the area of water sector. So I will start by explaining in brief what actually we mean by governance. So we are able to differentiate what the role of the government is and what actually the governance is. And then in brief, I will, in few more slides, as in when they come, I'll discuss about what are the major areas where the IT interventions have taken place and what are the areas which we have missed out, where there the future business is lying for the IT industry in the public space, in the policy making, in implementation, because huge money is going to flow in future in these particular sectors which are currently being totally missed out by most of the state governments and to some extent some of the ministries of government of India also. So to understand what actually governance is, and I have a passion for water sector. So I'm pursuing this sector continuously for last around 9 to 10 years and have worked for around 3 years in the irrigation water resources department also. So looking from the lens of water is the best way to define what governance is actually. So if we go through this definition, water, and I have highlighted few words in dark blue just to attract your attention. Water governance refers to the range of political, organizational, and administrative processes. So it is not only the government institutions or the government offices. It is not only like the executive engineer of the irrigation department or the AN or chief engineer of the public health drinking water department. It is something much more than that. Political, organizational, and administrative processes through which communities articulate. So there is a very big role of the community, of society, of people, of citizens in governance, which we forget at times. Their interest, their input is observed, is absorbed. Whatever their demand is, whatever their desire is, so that is absorbed by the system. That has to be absorbed by the government setup. Then decisions are made and implemented, and decision makers are held accountable. This is most important. So there has to be a way. If there is a good governance, then the people are heard to, they are listened to, their input is absorbed. Accordingly, the decisions are made by the government setup, and when they are implemented, if the outcome is not as what was desired, then the government officials or the political economy is being held accountable on the development and management of water resources and delivery of water services. So this is what governance is. So if we are talking about like empowerment of people, like digital empowerment. So what as of now currently we are doing is we mostly end up in talking about digital empowerment of the government, not of the governance. So, and government is an entity. It is like collector, it is like subdivisional magistrate, or it is tehsildar, or it is the honorable minister, or it is the cabinet, or it is the principal secretary, or the additional chief secretary, or the officers of the line departments. That is the government. Government is an entity. But when you talk about governance, it is something much, much more. So as I, in the previous slide, explained about water governance, that is only in one area. So like health, education, water, agriculture, animal husbandry, PWD, PhD, in all sectors, the definition of governance is slightly different. So what we have to look at is, when we talk about IT enabling or IT enablement or IT interventions in governance, which part we are tackling? Which part we are tackling? That is the whole question. So currently, as of now, so coming back to this, so empowerment happens with good governance. So if we empower people, we'll be able to render or deliver good governance. And or it is the other way around too. Good governance leads to empowerment of people. So normally what happens is that we talk about big schemes and big guidelines and big policy frameworks. But ultimately, in past 70 years, we have seen government schemes failing.
like poverty alleviation programs, like the rural household house building scheme like Indra Awas Yojana, or currently the Pradhan Mantri Awas Yojana in rural areas. So why these guidelines or schemes, we had to change them continuously? Because those policies failed. At the end of the day or down the road, they give kind of successful results. But maybe because the policy was not conceived in the right earnest, maybe the manner in which we devised those whole guidelines, they were not as per the actual socio-economic systems which prevail. So I'll give you a very small example. Very small example how government and governance are different. Let us take a case of a police station which is a part of the government. एक थाना लेते हैं. एक थाना in some X state and another thana in some Y state, say roughly more than 1500 kilometers away. मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं, वो लेना उचित भी नहीं है. तो वही आईपीसी लागू होती है दोनों थानों में, वही सीआरपीसी के अंतर्गत तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वही जुडिशियल सिस्टम है लाइक एसीजेएम, सीजेएम, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलर प्रोविजंस हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वही है. We have public prosecutors, we have ADPs, the manner in which the files are being moved, everything is same. So the government is same for both those police stations. But we keep on hearing, एक थाने में तो कोई सुनवाई नहीं होती है, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, है ना, तफ्तीश में उलटफेर हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है. And there is that another police station which functions very well. Why so? गवर्नमेंट तो एक है, सरकार का सिस्टम जो संस्थागत ढांचा है वो एक है, बट जो डिलीवरी है इट इज नॉट सेम. इट इज बिकॉज, सो आई एम हिटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट only for the very basic reason that sometimes a scheme or policy of government of India would be very successful, say like in Andhra, and would not be so much successful, say for example in Haryana or Rajasthan, or other way around, another scheme would be very successful in Haryana or Rajasthan, and the same scheme would not be very successful in delivering the results and achieving the objectives in Andhra. Why so? Because governance is different. That is the whole point. And it was very well explained by Pejovic, an economist in the year 1998, in his much celebrated paper, that the basic reason is that there is a set of informal systems. Like I gave you the example of a police station in one state which is not functioning well, despite being under the same law or under the same criminal justice system. So the reason is maybe like if it is a mining belt, so in that case what happens is that शायद mining mafia जो एक informal system है उसका ज़्यादा प्रभाव है. Maybe it is because of the caste politics. It is having a bigger role than the legal system which we have. So it was explained by Pejovic that it is the formal and informal systems, both, which determine how the governance would happen. So the governance would be different in Delhi, it would be different in Mumbai, it would be different in Lucknow, and it would be different in Jaipur, despite having the same government structure. So Pejovic explained like why, and sometimes we blame it to the culture only, that culture is different, but it is not so. Pejovic gives an example of like East and West Germany. Same culture before the fall of the Berlin Wall, same language, same people, same society. Despite that, West Germany grows at the rate of more than 3 or 4 times in terms of economy and living standards and individual per capita income as compared to Eastern Germany. So was it only the political ideology which was there? It was something more. It is because, and despite the fall of the Berlin Wall, though the wedge has reduced like anything, the gap has reduced in all these socio-economic development related parameters. But even then there is a gap, because it has been identified that there are still a set of informal institutions which have some role to play in East Germany. So my whole point is that these socio-economic systems are very complex. So when we talk about like IT intervention or finding IT solution to citizen related problems or the governance related issues, so
the solution will have to be unique to each situation and scenario and circumstances. We cannot have one size fit all kind of solution when we talk about governance. And considering this whole definition of government, how people are to be involved. So currently what is happening is, what we are doing, where the IT intervention is going in governance, it is mostly in governance. So lot of examples the Chief Secretary Sir gave. I think almost more than 75% of them were related to the first category. Our primary focus is on citizen services, because that is perhaps relatively easier even for the IT industry, even for the youth or the startups who are into IT domain and sector, to find solutions where the government interacts with citizens only for the purpose of rendering of service. So like paying of electricity bills or scholarships, or like applying for exams, or booking a reservation in a bus or a train, or flight reservation. So majority of the interventions are happening in that domain, which is a very small part of governance. That is what all I want to say. So we have provided round the clock 24/7 offices. It has reduced visit to the governments, and it has reduced manual effort for us, for the employees in the government system. It has reduced time, physical record keeping has reduced. It has reduced government to citizen transaction costs. Now you can apply anywhere. You don't have to travel to the government offices. And monitoring and evaluation has improved. So this is the core area where currently the representatives who are sitting in the audience are focusing upon. It is an easy business. So when I sit in the department, I have worked in a number of departments having public dealing, like energy, water, mining, revenue, industries. So mostly what happens is that when any IT vendor or industry representatives meets you, he comes with a solution. He says, sir, that we have got this solution. Do you have a problem which can be solved by this solution? So that is a problem. That is the barrier which we as policymakers find between us and the IT industry. So what we are not doing. So this is the point of governance. Like citizen interfacing functions, like government to citizens, we have done reasonably well. But our internal functioning, that is very weak. So there are a lot of states. When I was revenue secretary in the government in Rajasthan, so I just tried to test the waters and tried to know that how many states in the country have gone for deemed land conversion. So I came across 3 or 4 states who had done good work by then, around 3-4 years ago, in deemed conversion, IT enabling of land conversion. But unfortunately, what I was wanting to know, the similar result as expected I received, the backend was not computerized in none of these states. I don't know about UP as of now, what has changed in last 3 years. But as a test case, so if an investor or an industrialist or maybe a farmer or a small investor applies to the government, to the revenue agencies for conversion of land, that file has to cross 18 hands, 1-8. So it has to pass through 18 desks. Even as of now, 2022, it has to pass through different set of peoples from Patwari, ILR, Tehsildar, SDO, collector, and sometime to the government. So it will take a lot of time. कभी मौका पर्चा बनेगा, comments होगा, rules का examination होगा, 18 times. So this is the back end. Our government systems are very weak in adopting IT solutions in our internal functioning. So interfacing the people, the citizens, we have done quite a good work, but lot needs to be done inside us. So you apply for land conversion change, okay, you'll be able to apply it within 2 minutes. Initially, it used to take, say, around 10 to 15 days or sometimes a month. But then after that, what happens? So it is the same time period. It will take around more than 2 months, 3 months, sometimes 5 months, in fact. And the applicant would have to rush to different offices, sometimes to Tehsil office, sometimes to subdivision office, or sometimes to even to the collectorate.
So this is a point where we are very weak, and I invite the industry to find solutions how to go ahead for and assist the government and policy makers in doing the government process re-engineering, what you call BPR in the private sector, business process re-engineering. So unless I start thinking that how can I reduce those 18 set of people to maybe maximum 3 or 4 or 5, that is what my GPR is, government process re-engineering. So unless I do that, my whole purpose of IT enabling the government to citizen centric service gets defeated. Though I have reduced time maybe from like 100 days to 70 days or 60 days, but ultimately it has to be brought down to 5 days. So we have to start thinking about that. We should not be sitting complacent that, okay, we have IT enabled the interface with the citizen, because governance is something much more than that. Then interdepartmental engagement is entirely missing. So like I have worked in the irrigation department, revenue department, and mines department. I'll give you a very simple example. So when I was developing IT solution for the mining department, so like we were translating the lease area into latitude and longitude as per the satellite data. And before that, it was in distance and bearing pattern, what was started by the Britishers. So it was in prevalent in mining department in Rajasthan for last more than 40-45 years. So the latest technology is the total station technology. So because Rajasthan is a mining rich state and our major revenue comes from the mining activities. So there are a lot of disputes in like encroachments and lessees entering into the government land or forest land. And if there are adjoining leases, then there were issues of overlap of leases. So the solution which lied in IT was to translate all those lease areas into latitude and longitude coordinates, because that is never going to change and that never sums up the error when you keep on counting or progressing further to trace the area. And in latitude and bearing, you will keep on adding the error. So by then, there was a scheme of Government of India of digitalization of revenue maps, which was being done by the revenue department. Then there is a kind of digitalization which was being done by the forest department too. So, but when I went to these department as director mines, and I have also worked as principal secretary mines, I worked in mines department for 5 years. So it was very difficult to obtain the data which they already had, the revenue department and forest department, the exercise which they had already done. They had invested crores of rupees in digitalization or IT enabling of their own departments. But as mining secretary or director mines, I was not able to engage in terms of creating IT network so that I don't have to reinvent wheel. And further, because whenever the disputes arise in future, so there is a kind of say, just to make you understand or to explain you, there is a committee of forest guard and like patwari and mining foremen. So again, the disputes would keep on arising for times immemorial in future. So best way is to integrate. So interdepartmental engagement is entirely missing as of now in our governance setup. Now we are talking about what is happening inside us, what is happening within the government. It is entirely missing. And there are large number of areas. Water is another sector. Water sector, or as Secretary Water Resources, I had to deal with, you'll be surprised to know, 17 departments, 17 vibhag the. Agriculture, industries, mining, revenue, drinking water, health, and then watershed department, then to some extent even the education department. So these were the major departments, 17 departments. But each department is standing alone in a silo with their own IT solution. So that is a very, that is not a good state of affairs, if not a very bad state of affairs. At least I can say very safely that it is not a good state of affairs. So we are very strongly missing an interdepartmental engagement as far as IT enabling or IT interventions or finding IT solutions is concerned. Then government process re-engineering, we are losing a big opportunity. When I was in industries department, then based on this Punjab model of one-stop shop, so we were planning to come out with the act, similar act, and we came out with it also. Then we created a kind of empowered committee and sent the apex level screening committee just to expedite the investment proposals. So
what we were doing in that whole process, which fortunately and touchwood I could change because of my continuous pursuance. And after that, I went to the IT department also as Principal Secretary IT. So what we were doing was that whatever procedures and rules were laid out to us in n number of circulars and orders and directions and guidelines, we were simply asking our vendor, the IT partner, to develop a IT platform for that. That is not at all a good idea. Once you have the opportunity that now you are IT enabling the in-house business processes of your department, then that is the biggest opportunity. We should start thinking of changing those whole processes. Like what I mentioned about the land conversion thing. So when we are creating a platform, digital platform for disposal of applications for land conversion, then it is a high time to withdraw all those old circulars or modify those circulars and do the whole process re-engineering. If we do that, it becomes very easy for the IT partner also to develop a framework, because these are the systems which were created way back like in 1950s or 60s. And now we want to fit them into the IT solution framework, then it becomes very difficult. So we are losing a big opportunity here. So what I personally try is that I am in whichever department, I always try to reprocess the whole thing. So we need to start thinking, नहीं इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? Let us change this. 3 लोगों की क्यों रिपोर्ट चाहिए? एक ही की रिपोर्ट से काम चलेगा, है ना? ये चैनल ऑफ डिस्पोजल ये क्यों होना चाहिए? Why it should go up to the secretary? Let the HOD decide it. Like we delegated lot of powers when I was in the revenue department. We had delegated lot of powers of land conversion to the grassroots level, not even to the collector. It went up to down below to the subdivisional officer, to SDO. Similar was in the mines department. Like in minor minerals, we delegated many of things. So government process re-engineering is a big opportunity which we are losing. Another problem which you guys should ponder upon, the industry should ponder upon, is that the majority of the data which is available in the departments is not in machine readable format. So most of the data, either it is in PDF form or it is in text form, good for the purpose of providing information under the RTI Act. But when you want to, as the CS also mentioned, data is the gold, but that data has to be available in a utilizable form. So what we call it is a machine readable form. So if as Secretary Water Resources or Secretary Mines or Director Mines, I'm wanting to use the data related to Forest Department, it should be available in such a format that I should be able to extract and pick up data and then utilize that data. I should be able to do the data mining. So we lack broad standards. I don't think other than Ministry of Power or to some extent Ministry of Water in certain areas has been able to do it successfully. Standardization of data collection and data validation, that has to be done. Otherwise, we'll fall far behind. We'll end up only in IT enabling the government to citizen interface. But our internal and in-house systems will not be able to improve. Scalability and interoperability, a major problem when we interact with the vendors. Like if I have used, say, 1 lakh smart meters in the power sector, I have worked as Principal Secretary Energy, I was Chairman Discoms. So there was a tender a few years ago which was given for deploying 1 lakh smart meters. So that contract was over after 4 or 5 years. So when we went to the new vendor, we went for the open bid to discover the price. Then the vendor came and said, "Sir, ये तो पुराना system कैसे काम में आएगा? इनका तो protocol ही हमें नहीं समझ में आ रहा है. Data is not available." So that is a big nightmare for the government departments. So we have to see that. I'll finish in another 5-6 minutes. Shovik, 5-6 minutes more I'll take, then I'll finish. Yeah, you only 4-5 minutes. So then vendor lock-in, that was another issue. So there is much more we can do in IT enabling of the government, of the governance. More focus is on the government aspect. So I am skipping these few slides. So these are few points like what we are missing in the water governance, because as the sir was also mentioning, like data and information gap, the whole water cycle, there are n number of points where data is missing. We do not have
cross-sectoral stakeholder data exchange is not available. Space and time scale, particularly when we talk about climate change, we know COP or the intergovernmental panel has given number of reports that what will happen in India or Indian subcontinent or South Asia. But when we drill it down, when I sitting in Rajasthan or like in Uttar Pradesh, we have to design a policy, adaptation policy, maybe for the agriculture sector or for the water sector. We don't have anything. So data or modeling results are not available at regional and local scale. We have to start thinking about that. Then risk analysis, which is needed much more than ever, that is not happening. So the industry needs to focus on that also. So I'm skipping these few points. So, and last point, I'll come to this point E. So we are talking about digital empowerment, good governance, transitioning from e-government to e-governance. But if digital empowerment is not there, but fortunately, Government of India is doing an excellent work in digital empowerment through Digital India. And as CS also mentioned about the N number of interventions which are taken in various departments. So we have to focus much more digital literacy. Otherwise, we'll end up in creating a huge divide. Only a particular set of people would be able to use these IT services, or the government officers and employees at the most. But governance at the end of the day is much beyond than government. We have to start thinking about enabling of the citizens, their role, their feelings, their feedback. Policies have to be designed, and then we have to be held accountable. So that is what I think e-governance is. Thank you for inviting me and giving me so much time. Thank you. Thank you so much, Sri Ajitab Sharma, IS Chairman and Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited. With his vast experience in the policy making, I follow him in LinkedIn. I can assure you can learn a lot of things, the kind of transformation he has done in the water sector. And as you have said, that it's time that, okay, we are giving solutions to citizens for government service delivery. What about changing our own self? There is a system within. And I think there also there's a huge scope for industry to collaborate, to change the mindset. Once we change the mindset, I think we can change many things. Thank you so much. A huge round of applause for him. I know Honorable Minister sir has to leave. उनको जाना होगा, but उनके उससे पहले सर हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है, award ceremony. So I request you can stay back 5 minutes and then we'll have the industry perspective. So we have the award winners from the state of Uttar Pradesh and from some other states also. The first award goes to, this award is proudly presented to Silvassa Smart City Limited under the category Excellence in Smart Cities Through Innovation for their project Cycle to Walk. A huge round of applause for them, please. Can we have the Silvassa Smart City Limited team on stage, please? Yeah. थोड़ा ताली जोरदार हो तो विनर्स को और भी थोड़ा encouragement मिलेगा. The Silvassa Smart City Limited team for their project Cycle to Walk. Huge round of applause. Thank you so much, Silvassa Smart City Limited team. The second award goes to the award proudly presented to Surveying and Earth Observation Division, APSAC, ITENC Department, Government of Andhra Pradesh, under the category Excellence in Government Process Reengineering for Digital Transformation for the project Volume Estimation of Municipal Solid Waste in Vijayawada Municipality using drone remote sensing technique. Ajitab ji was talking about government process reengineering, so this award is exactly for that. Next award goes to Lucknow Smart City Limited under the category Leading Organization in Transforming Healthcare through Technology for their Health ATM project. Do we have anyone from Lucknow Smart City here? A huge round of applause for the Lucknow Smart City Limited team. The second award goes to Nagar Nigam Lucknow under the category Governance Innovation in Urban Housing and Development
for their Ahana Enclave residential project. Can we have the team here on stage, please? Yes. Now, all the way to the south from Kerala, the award proudly presented to Kerala State Electricity Board Limited under the category Leading State in Building Futuristic Sustainable State of Future for the project Solar Penetration into Kerala Grid, giving due importance for rooftop solar. A huge round of applause for them, please. She has come all the way from Kerala to attend this conference. He'll be speaking in one of the sessions as well. As the Kerala State Electricity Board Limited team for their project Solar Penetration into Kerala Grid, giving due importance for rooftop solar. Thank you so much for coming all the way from Kerala to the state of Uttar Pradesh. And the last award goes to Lucknow Smart City Limited under the category Excellence in Building Futuristic Sustainable City of Future, a leader in city security and surveillance using emerging technologies for their ITMS project. Huge round of applause for Lucknow Smart City Limited team. Yes, can we have the Lucknow Smart City team on stage, please? Lucknow Smart City Limited team for ITMS project. और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं श्री अजीत सिंह पाल जी का for being the chief guest of this prestigious congress. Sir, before you leave, we have a small token appreciation for you. Can we have the chief guest moment on stage, please? I ask Sangamitra Mohanty and Neha Pal to come on stage and hand over the memento to him, Honorable Minister. Huge round of applause for him, please. Thank you so much. I think Honorable Minister has to leave for the meeting. Thank you so much, sir. Thank you so much. We'll continue with the inaugural session. Now we'll have the industry perspective. Can I request Mr. Amit Raghuvanshi, entity head, ASR India Private Limited, to share his vision, and then I'll invite Mr. S.N. Rai from Lava. Over to you, Mr. Amit Raghuvanshi. Hi. Hi, good morning, everyone. In fact, I was thinking when all the senior members who were presenting and they were they were just giving their thoughts, and I was worried at one point of the time what I am going to speak about. But I'll just like to share one or two experience of mine when a way back, 20 years back, when I was a part of the Gujarat, when our Honorable Prime Minister was a CM at that moment. In 2002, he came as a guest for inaugurating one of the IT company. And at that moment, he has that vision, because during his speech, I could able to remember that he has said he would love to have a IT manufacturing in India. And we can see that dream of his comes true now at this junction when he has introduced Atmanirbhar Bharat program, where now most of the IT people are investing in India. Manufacturings are getting placed in India. And that's the vision of our leader, of our country, Honorable Prime Minister is. And that's really a big honor, I would say, that we have this kind of the leader. Secondly, when today I was coming from Delhi, I flew from Delhi, somehow the flight got delayed. So I landed almost by, I was supposed to land by 8:25. I came out of the airport by 9 o'clock. And I was wondering how I'll able to reach on time. So I called my colleague, should I take the cab or no?
He said, no, it's better you should go for the metro. And I was surprised. Is it metro? Really, it is going to work fast? Will it be neat and clean? And to my surprise, I was here in nothing more than 30 minutes time, directly from the airport. And when I Googled it on the Uber app or a Ola app, I found that they are going to take me an hour's time. And that's the development of the UP government which has done. In fact, I would really commend, and it's an honor that we are a part of this event, and we have been chose to be a part of this event. As an Acer, I would just like to say that Acer Inc. we started in 1976, a company which is a Taiwan based. They started with a vision to teach a microprocessor dream to the industry, and we had been manufacturers for lot many companies at that era. Later in the part 1999, Acer India got formed in 9 September 1999 with a small set of the peoples, those who has the vision that we have to grow in this industry. And 2000 from 1999 till date, there are so many new things which we have come up with. No one has ever thought about it. From 8-inch screen till 75-inch screen, we have the product available. Today, we have bagged one of the largest India's order of tablet, which no other state has ever thought of, concluding such a fast execution, which which UP government has done. That's a transformation. That's a thing which has done. Last year, they have come up with the requirement, and in fact, there were lot many things which were going on, and there was so huge quantities which were getting deliberated. So most of the industries guys, they were thinking, is it really it is going to get executed? So no one was believing. And normally it has always been noticed that whenever there is a procurement in the government which happens, it always been noticed that it takes a time. So we were no one was anticipating whether this will go well, how fast it will get executed or not executed. But it's really appreciable and commendable job, I would say, which UP Desco has done. They have invited all the industries before floating of the tender for the discussion. They had that vision to ensure that this dream of honorable chief minister should be executed well in time and before time. And such a large procurement which has happened on the for the IT industry, which has never ever, no one has ever dreamt, and it was done and executed so fast and so well. It is really commendable, I would say. Never we have dreamt about something can happen like this in the state of the UP. And the kind of the development what we have seen in the UP is humongous. And that is where we have, under the PLI scheme, we have tied up with the Dixon Technologies for the manufacturing of notebooks in Noida and in the UP belt. So let us come together. We want you guys to have the experience of the product. We have the stall available. We have all the products. Let's come together. Let's sell together and let us work together. That's it. That's all what I want to say. Thank you. Thanks, Amit Raghuvanshi from ASO India. That has been the motto as well of creating this knowledge sharing platform, that we all come out of a mindset of working in silos and learn about the best practices, whether it be it government to government, government to industry, and what kind of new innovations are being done. We can have a glimpse of that, and we can again align ourselves to attain our goal using those kind of new technology. I think Amit was telling exactly how
certain programs have been launched and successfully implemented in the state of UP. Thank you. Let's have a perspective from Mr. S.N. Rai, co-founder and director of Lava International Limited. I'm sure he has got many things to say because of his vast experience as an industry leader. Over to you, sir. Honorable guest on the dais and industry and media. मेरे पास कुछ interesting story है. We started our company in 2009 and और आज भी हम इस मंच पे भी यही बात कहने जा रहे हैं. हम सारे लोग private sector में we were at a very senior, all 4 friends when we thought that we'll make this company Lava. तो हम मोबाइल के बिजनेस में नहीं आना चाहते थे. हमारा विजन था दैट वी वुड लाइक टू डू अ बिजनेस ऑफ एम्पावरमेंट. एक्चुअली हमारे कंपनी का अगर विजन स्टेटमेंट भी देखें, टू एम्पावर पीपल टू डू मोर एंड बी मोर. और सेक्टर 15A नोएडा जहां हम रहते थे, वहीं क्लब में बैठ के रोज ड्रिंक विंक करके पूछते थे कि यार जॉब छोड़ के ना कुछ ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो हमें खुद होना चाहिए. And we wanted to come in a mobile service business because उस समय multinational Nokia वगैरह हुआ करते थे. Nokia before it was sold to Microsoft and अब तो खैर now it's a brand license company. So उस समय हमने सोचा कि ये लोग ना नीचे के लोगों को सर्व नहीं कर रहे हैं. बट हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन थे. हम या एजुकेशन में जा सकते थे because that was an empowerment. Telecom में गए because it has changed the habit of the people and it has created a parallel economy around कि आज आप प्लम्बर से बात कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं जिनको बहुत से चैनल से आना पड़ता था. They had a direct access to voice and messages and that's how we thought it's a business. And चूंकि multinational don't understand our country very well, and in the bottom third of pyramid, there was a huge opportunity. And prior to that, since I have worked with the multinational, I know their thinking, their culture, and somehow their commitment to the country. Because so we believe that we should build our own company, and that's how the Lava was formed. और उससे में हमारा thought process भी ये था कि शायद हम अगर 100 करोड़ का भी business कर लें तो बहुत ज़्यादा होगा. But very first year, we did close to around 500 crore of business. जो हम सभी के लिए सरप्राइज था. Because government helped, bank helped, and some of the angel investors helped on those days. And this I'm talking in 2009, and since then we have never seen back. Today Lava is available in the 27 countries. In my part of the presentation, first half I'm going to discuss is what Lava is, of course, more from the Lava infrastructure point of view. But in the second half, how Lava see our country and what actually we can do. I mean, I believe this 1 trillion is still a very easier target, I mean, if I see the UP potential and I deeply research and studied the South Korea and I see our population, which is 22 crore available, UP alone has a provision to reach up to 3 trillion in next 12 to 15 years time, right? So that's the potential we have. And then I would like to talk that how it is relevant, as today's discussion. Can we have a quick introduction thing? If you can help them quickly. Yeah? Yeah. Next. From? Oh, that's good. So, as in a company, we have a so when we started traditionally importing, putting brand, investing only in customer service. But then whatever money we made, we all invested back to the company, and that's when primarily building our own research and development.
Lava is the only Indian company available in 27 countries. We have a complete R&D, right from the tooling to microelectronics to power electronics to hardware, software, embedded, and cloud. Highest value addition we have been able to provide, and that is why the Lava is the only Indian company could survive because of all the onslaught of the Chinese deep capital access which has happened. We have been adjudged as the best digital supply chain company. Lava represented an event organized by MIT in Japan also. We were also the front leader to the Prime Minister's Digital India program. We have the entire ecosystems absolutely automated, right from the JDA, HANA, like distributor. So even to the last leg, we are deeply connected. So that's how, our journey is that EMS started. In fact, we are the only company who was certified for AT&T United States. And currently, we are shipping more than 500,000 devices to the America, totally designed by India, produced by India, and shipped to the US. Okay. There have been many brands from the outside, but you may not know that in the back end there is a Lava. So like if you see all the GE medical devices, all the ultrasound machine terminals supplied whole world, that has been designed, developed, and delivered by Lava. Also, we have done of course, the Nokia, that also we are producing now, and in fact now we'll also be designing it. Motorola, we have started designing it, and now even for some of the phone category globally, we'll be selling it, our product, even on the Motorola brand outside. We also have some development for the Airtel is some customized product. Currently, we are already operating in these countries. The country which I would like to mention, in 2019, Lava was the second brand in Thailand. And same way in the Egypt, we are still number 2 brand. So they are the markets which has really adopted very well for us. Right? Currently, we have acquired one company in US. It's called B Mobile, primarily for the Latin America. And maybe the next year, we have a big plan to push our product to the Latin America. So we also faced a difficulty at the time of switchover from the feature phone to the smartphones. Since the feature phone, we had a very high value addition. A smartphone, we have a relatively average value addition. We got the hit because of the competition. And that's where we thought the only way to fight back is to invest more in R&D, more in design, and that is how we can fight back to all the smartphone things. There are some of the product, which we have developed is payment and banking, that is for the feature phone. We also got the best innovation award from the Microsoft and also from the government of India. For the health also, we developed infrared thermometer during COVID time, just to do the quick things. Now, this is something as a countryman we all must know. And I think it relates to the UP also. Since right from the 1840 to 1860, maybe the Siemens, Nokia, Ericsson's, Bench, because there was a world war, so the entire manufacturing went to the Europe. Okay. 1900, US also started manufacturing mainly in the automobile, which called Ford, IBM, Motorola. These are the company which were formed. And now today, when US outsourced everything to China and South Korea and Japan, and post that, if you see from the post 1980-85 onwards, US is producing only bubbles, to
2000 bubble, 2008 bubble, and now current stagflation bubble. Because you are making innovations, but you are not having an infrastructure of manufacturing actually making weak. And the think that the US, now they are thinking, they are flying back, now they are investing, subsidizing robotics manufacturing, they are trying to pull back to the manufacturing. So it is so relevant from that point of view. 1940-60, same Toyota Japan. 1960 was a LG Samsung, one of the company I was part before I was part of Lava. Then, as gentlemen already said, 1976, 1980 is what the Foxconn, Acer, and many Taiwan industry came, and they got a significant share on the terminal business. Once upon time, they used to hold clearly 74, 76% of entire terminal production was only by Taiwan. Then the era of China came because the skill transfer has happened. This year is now, at least this decade is for India. And there has been a global champion who have already signed the PLI scheme, is like Apple, and there are other competitive manufacturers, like you rightly said, is a Dixon, and there are many other companies. But as an Indian champion, we have also signed up even for the entire manufacturing value chain that goes to the component, R&D, and competitive manufacturing. So there is a differentiated scheme was given to Indian champion first time in 1991. Till then, our previous government, maybe because of the WTO signatory and there are other issues, I think they've never focused that much. But at least current government has taken a very tough stand that they have to protect, they have a feeling of nationality, and they must build a domestic company. And that's where, they given a qualifying criteria for a domestic industry is much favorable than to an international company. And that is required because A, we lack infrastructure. We have a very high cost of capital. And third is our society at large also needs some support. So such schemes are actually going to help, and we are sure that this PLI will take Lava to a different league. So in a design interactivity, technology, business viability, design innovation become at the center. If we do the innovations, and I was so sure that, there are few people have just got the award. Small innovations are creating a big impact. And the best part is that we are recognizing and we are encouraging, and that's where the stand-up, one very interesting idea where even state government is following for a startup. In the US, there is a company called Y Combinator. They also they have the representation in all Harvard, Berkeley, Stanford, Purdue, Texas, all top 20, top 30 institutes. They, right from when the kids are in the second year or freshman year, second year or third year, they are investing to small angel investments, And if you are creating a pipeline of investment of 20, maybe even if 10% succeed, it become nearly a multi unicorns, So that's where, such innovations where the academia and the industry relationship as should have been, actually our country lacked it, Now we are also approaching IIT Chennai for developing certain sound codec. We are also trying to buy some chair at IIT Delhi for building some kind of a security protocol. We are also we are pitching a product to our army people that, you should have a absolutely more secured phone, encrypted phone, that's a hardware-based encryption and decryption, So these are the things which is actually
possible to develop the indigenous technology when the Indian academia and the industry works together. So that has been our core function in the design, right from the ID, mechanical design, hardware design, software, all we do it ourselves. That's where, sir, I would like to need you guys' attention also here. See, there are some resources already available, for the vision of 1 trillion. One of is that the potential of high value addition of the PLI 2.0. Major shift of supply chain from chain to India from China, because China forget about the diplomatic issues or forget about zero COVID policy. Per se, even the wages advantages also have gone. Even China labels today is costing $320 to $340, which is maybe 40-45% more than India. But when you see the productivity, Indian productivity is 1.3 from China. Because that's where we have a study when we did a production here in India. So because of this advantage, people are seeing that it's a viable place for us to invest. And why? They are not coming out of love. All the component ecosystem which are planning to shift, and we must ensure that they should come to our cluster in Noida. So which is currently 42%. I think government data was 45%. But in our estimate, because of the export growth, I believe we have a potential to go to 65 to 70% in Noida alone. Over the last 3 years, the export of the smartphones have gone around 139%. And going forward, with the Apple, the entire movement is going to happen in 2023 and the 24. So by value, and then maybe we are also enhancing our capacity. And then there are many other companies who are shifting our OEM business to us. We believe that export opportunity will continue to be around 140, 150% next 5 to 6 years. So data is a new currency of digital empowerment, and terminal devices like mobile, tablet, router, IoT, RFID sensor, these are all terminals. So unless you don't have a terminal, you can't capture the data. Okay. There are some challenges like Honorable Speaker spoke about that the data protocol, something is available on the PDF, something is not even converted digital, right? And all those data, and then you'll have to convert the data, and then you have to make it to a multiple format of accessible. But then it actually will change the life. Rather, there's a lot of governance which we are doing at this moment, okay, which is still not a semi-automated, still, but now the technology will actually transform. What will happen in the 5G? The predictive analytics will work much higher when the moment it goes to 5G, because you don't have a problem of the speed and bandwidth. So that's where the real advantage you are going to get it. Actually, you all are going to up for a surprise when the various applications are going to come on the 5G. Because some visualization to a various international forum, like I saw in Japan, and also I saw the way in the US, even the entire traffic systems, even entire traffic monitoring system, then also their punishment and penalty, everything is all faceless. And rather, if you're moving from your home, and if you're going, I don't know how many people have actually got an experience of an autonomous driving out there, and now with the next Tesla plate and the new platform which has come, that is fully autonomous. And every automobile industries have also announced it. Maybe not in 2023, 24, but 30, 35, and the kind of road infrastructure and everything is happening. So much of the robotics investments are going to come. There's so much of the other mechanical automation, microcontroller, database conversion, the entire traffic industry will be.
So all the human race which is available for us currently to build, the structure which we are trying to do now, will also require much higher value add job, and that kind of an investment we have to do. Industry normally have a profit motive, right? So their capacity to take a deeper risk for the purpose of social, I have no guilt to accept it. It's moderate, But when government takes such stand, where it has a deeper risk, but they have a responsibility to manage society very well, so that's where the public-private partnership is very, very critical. So I see a very big opportunity out of the ITIs of Uttar Pradesh, And my suggestion is that if we can do something to enable all the ITI around here on certain specific domain knowledge, will also help, because the kind of number which we are talking about should be able to create around 65 to 100,000 jobs, fully skilled, and those boys, even from a smaller places, if we can create that kind of on a specialized industry specific training right at an ITI level, that will create our further competitiveness and productivity both. So there are few courses which I suggested, in case if somehow it can be created a part of them, it will be a very great help for the industry. Like maybe the new courses like embedded, power electronics, precision tooling, mechanics, then there is also some of the sensor, color optimization, quality systems, grading. So these are the small courses which will enhance their ability, and industry requires such skills in our companies, right? And another significant role is to a women empowerment. We find that there has to be a special provision for women to be given more incentives, so that they can come, because they are very, very relevant and they are very productive for the electronic industries. And the last, that's where I need that there has to be a design excellence lab, which my request is that if state government can consider on certain bit of a corpus where the cluster is formed for the purpose of the design validation, training, excellence, and then the future capex equipment. Maybe if we want, we can do a public-private partnership where some industry can also put some equity and government can also put some equity, and we can create those kind of an excellence, and whole industry can get benefit. This is a absolutely replica model what Vietnam and China has done for their industries. So this is one of the suggestion I would like to make it here. And I see a potential of nearly $220 billion in next 3 to 4 years, which is close to around 20 to 22% of the 1 trillion. 250 to 60 billion is, I see, an current GDP of the UP. We are not very far for a 1 trillion. This is absolutely a doable number. And we really have to structure out and shape it up so that we can work together. Thank you very much. Thank you so much, Mr. S.N. Rai, co-founder and director, Lava International Limited. Again, as I was saying that this kind of conference always give you a new idea, and also we try to get some time to look back how far has been the journey, where we have reached and where we can go. We all are trying to realize the vision of $1 trillion economy, and I'm hopeful deliberations made today, both by the policymakers and the industry leaders, will give us some good opportunity to think to achieve that goal. Thank you so much, all of you, for joining us in the inaugural of
APAC Third India Digital Empowerment Meet and Awards. So with this, we come to the end of the inaugural session. I request the program chair of this prestigious summit, Sri Kumar Vinit. We want to present you with a token of appreciation from our end, sir. Can we have sir's Kumar Vinit sir's thing on stage, please? I request Sanamitra and Shivani to come on stage and hand over this to Kumar Vinit sir. He's the program chair. We'd like to share one token of appreciation with the, I can say, guests from other states, to Mr. Ajitav Sharma, IAS Chairman and Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited. Can we have his movement on stage, please? Yes. We always believe that industry is an important part, so we have something for Mr. Mr. Amit Raghuvanshi, and for Mr. S.N. Rai as well. Can we have the speaker memento for Mr. Amit Raghuvanshi, Entity Head, SR India Private Limited? And to Mr. S.N. Rai, Co-founder and Director, Lava International Limited. Sir, before we conclude the inaugural session, we have with us Mr. Ashish Tiwari, Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. So if you permit, you can have a small special address of 5-10 minutes, and then we can break for tea. Or we can break for tea. Yeah, we can break for tea, and then we have sir's address. A short tea break of 5 minutes. We have a small award, Vinit sir. We missed out on one award on the UP government transport department. I will request if you can kindly hand over the trophy to them, please. Can we have the UPSRTC team on stage, please? Thank you so much. Thank you so much. With this, we come to the end of the inaugural session of the APAC Third India Digital Empowerment Meet and Awards. We'll have a short tea break, and then we have a special address by Mr. Ashish Tiwari, who is the Secretary of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. Thank you so much.